Hello, my dear students, how are you? Again, after the Diwali, I would like to welcome you all in this beautiful channel Badai Ka Kavach and the Standard 10 Social Science classes organized by the Noblehood School, Upaleta. Welcome, students. As you know, in our previous session, before the Diwali, the 4 to 5 months time that we have spent in the online education is quite fruitful to all of us. Due to this pandemic, as we know, the physical teaching is not possible due to this pandemic. Okay, so we are constantly depending on the online education, and we know that the situation is whatever to be, but we need to face the change. So today let us start our unit number 5, India's Heritage of Science and Technology. Starting from the very first point, which is about the introduction of the India's Heritage of Science and Technology. The discoveries and the inventions in the field of science and technology have brought countries of the world closer. As we know, through the internet, through the communication channels, communication medium, various social media networks, helps us to come closer with the entire world. Cooperation among all the nations has increased, hence, new attitude has developed. Countries have become oriented towards peaceful coexistence and world peace. Science means systematic knowledge, and the technology means the practical utility of systematic knowledge. Science and technology, in spite of being two different words, they are linked to each other. Student, this is the one correct definition of the science and technology. Science means the knowledge or the systematic knowledge, and the technology means the practical utility of systematic knowledge. So, students, note down this definition because this is most important part for your examination purpose. Actually, this is the correct way to understand any of the topic, that currently whatever we are studying, whatever we are learning from science, from social science, from various other subjects, we need to imply or we need to implement this knowledge in the near future in our practical life. So, this science and technology are not the two different words but the two complementary words for each other. They are linked to each other. Now, let us move to the next main topic, heritage of ancient India in the field of science and technology. The great sages of our ancient India have gifted invaluable heritage of science to the world. They have made outstanding contribution in the field of metallurgy, chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, Vastu Shastra, and physics. So, in the field of metallurgy, in the field of chemistry, surgery, mathematics, astronomy, physics, Vastu Shastra, these are the branches of the science and technology. It is a matter of great pride for us. India have contributed not only in the field of literature, art, religion, education, and philosophy, but also it has made immense contribution in the field of science and technology also. As we know in our previous chapters, say for example, literary heritage of India. India gifted many good literature or the best literature books to the world. So, parallelly, India was also
helpful to the world in terms of science and technology. Modern age researchers have proved that India has a scientific attitude along with religious outlook. Due to our past experience, our ancient science and technology heritage, we strongly believe that the India is a religious country and parallelly it is also believing in the scientific attitude also. So let us start the section metallurgy, which is the first stage of India science and technology heritage. Since the ancient age, the people of India used metallurgy in their practical life. Ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. A metallic idol of a female dancer discovered from Indus Valley civilization is an exemplary achievement of ancient India. Later, statues of Buddha belonging to the Kushan period have found at Takshashila. सो स्टूडेंट, जो ये मेटालिक आइडियल्स मिले हैं फीमेल डांसर के, जो सिंधु खीण की संस्कृति के बहुत बड़े प्रसिद्धि गिनी जाती है भारत की, एंड लेटर स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला. और तक्षशिला में से बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिली है वो सबसे बड़े उदाहरण है कि तभी के समय की, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, तभी की जो मेटलर्जिकल साइंस है वो कितनी डेवलप्ड थी. इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोल पीरियड न्यूमरस मेटल आइडियल्स वर मेड. द स्टैच्यू ऑफ नटराज, a masterpiece in sculpture, is famous all over the world. It is preserved in museum at Chennai. Another well-known metal ideal, Ram the archer, can be seen in the museum. Artistic statues of god, goddesses, birds and animals and beetle nut cutters are considered to be the best example of metallic art. So, students, these are the examples through which we can identify that how prosperous our science and technology heritage was. All of them have important place in the history of India. Right now, this kind of sculptures is very difficult to made by the sculpture artist. So at that time were no machineries, no sharp tools, no any extra modern facilities were available, and at that time the artisans, the sculpture artists were made this kind of sculptures. So how difficult it was. After that, the second most important section of the science and technology heritage is chemistry, which is popularly known as alchemical lore at the time of ancient India. Chemistry is an experimental science. Not any of the single concept is accepted without experimentation inside the chemistry. This science is very useful for various minerals, plants, seeds for agriculture, making of various metals or to bring changes in them. It is also useful for making medicine. So दवाइयाँ बनाने के लिए, अलग अलग धातु के अंदर परिवर्तन लाने के लिए इस विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है. आचार्य नागार्जुन, a learned Buddhist of Nalanda University, is known as Acharya in the field of chemistry. Please note down this sentence. The Acharya means the principal of the chemistry was Acharya Nagarjuna, which is a learned Buddhist of Nalanda University. So, we already studied about the Nalanda University and we know about the fame of the Nalanda University. So, student, how Nalanda University was famous, we can identify that thing from this concept that the Acharya of the chemistry, the principal of chemistry, was a learned Buddhist from the Nalanda University. He had written books like Rasaratnakar and Arogya Manjari. So students,
please also take a note about these two books, which was written by the Acharya Nagarjuna. Acharya Nagarjuna advocated the use of allopathy along with the herbal medicine. Means students, Acharya Nagarjuna suggests that we should utilize allopathic medicines along with the herbal medicines. The herbal medicine is made up by the plants and various kind of condiments. So औषधियाँ जो है उसके साथ साथ रसायनों का उपयोग करके हम जो है वो दवाइयाँ बना सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया गया आचार्य नागार्जुन के द्वारा. It is believed that the use of mercury ash as a medicine was initiated by him. और ऐसा भी कहा गया कि जो मर्क्यूरी होता है उसकी ऐश यानी कि राख जिसे हम कहते हैं, भस्म जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल दवाइयों के अंदर करने की शुरुआत भी आचार्य नागार्जुन के द्वारा ही की गई थी. नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च. नालंदा यूनिवर्सिटी के पास अपनी खुद की भट्ठियां थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री की लैब्स थी तभी के समय में. आई एम टॉकिंग अबाउट द 2nd and 4th century. The description of main ras, upras, 10 types of poison as well as various types of salts and ash of minerals is seen in the chemistry. 10 प्रकार के जहर, पॉइजन जिसे कहा जाता है, रस और उपरस और अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स और मिनरल्स के बारे में केमिस्ट्री के अंदर कहा गया है. The copper statues of Buddha reflect an expert knowledge and skill in the field of chemistry. बुद्ध का जो ताम्र प्रतिमा थी उससे हम ये एक चीज देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर उसका कितना बड़ा योगदान था. This copper statue of Buddha discovered from Sultanganj in Bhagalpur district of Bihar. जो ये बुद्ध की प्रतिमा थी, धातु विद्या जिसे हम बेसिकली कहते हैं, मेटलर्जिकल साइंस, कि जो हमें भागलपुर जिले में से ये प्रतिमा मिली जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट थी और वजन तकरीबन 1000 किलो था. एंड द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 फीट हाई, 18 फीट लंबा ये जो स्टैच्यू जो है और जिसका वजन तकरीबन 1000 किलो है, उसके ऊपर से हम ये एक एजम्पशन लगा सकते हैं. एन एक्विजिट एग्जाम्पल इज ऑफ विजय स्तंभा, द 24 फीट हाई आयरन पिलर विच वेज 7 टन, बिल्ट बाय चंद्रगुप्त टू, मीन्स उसका नाम था विक्रमादित्य. यानी कि विजय स्तंभ जिसकी ऊंचाई तकरीबन 24 फीट है, लोह स्तंभ जिसे कहते हैं, कि जिसका वजन 7000 किलो तक का है, 7 टन वजन वाला जो वो लोह स्तंभ है, कि जिसका निर्माण चंद्रगुप्त दूसरे के द्वारा किया गया था. इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरीज द पिलर हैज नॉट येट कोरोडेड. एक विशेषता तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 7000 किलो का स्तंभ बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होता है और उसकी ऊंचाई तकरीबन 24 फीट यानी कि 2 या तो 3 मंजिला इमारत जितनी है. तो उसको बनाने के लिए कितनी बड़ी फर्नेस चाहिए होगी. 7000 किलो लोहे को या तो जो भी मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया है उसको पिघलाने का जो है वो खर्च कितना हुआ होगा, उसको पिघालने के लिए कितनी प्रोसेसेस करनी पड़ी होगी. तो ये सारी चीज़ें अगर हम जानकारी में ले तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड तभी का मेटलर्जिकल साइंस था, ऐसा हम कह सकते हैं. सो दिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ इंडिया और alchemical lore of India. Okay. So student, from this topic chemistry,
यू शुड टिक मार्क। और आपको जो एक चीज याद रखनी है वो है आचार्य नागार्जुन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ या तो बुक्स, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। फिर आचार्य नागार्जुन कहाँ से पढ़े हुए थे, उनका क्या योगदान है केमिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के दो बड़े एग्जाम्पल्स, बुद्ध की प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और विजय स्तंभ जिसे कहा गया है चंद्रगुप्त दूसरे के समय में जिसे बांधा गया दिल्ली के अंदर, उसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। आफ्टर दैट साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, वैदिक विज्ञान और सर्जरी का पूरा विज्ञान। इंडिया अटेन्ड एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी सिंस एंशियंट पीरियड। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, वाघभट्ट pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense researches and reached to the greatest height. महर्षि चरक बहुत ही बड़े मेडिसिनल साइंटिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वैदिक विद्या के जानकार। महर्षि सुश्रुत और वाघभट्ट कि जिन्होंने अपने मेडिसिन और सर्जरी के संशोधनों से वैदिक विज्ञान को एक बड़ी ही ऊंचाई के ऊपर ले गए थे। महर्षि चरक हैज रिटन अ बुक चरक संहिता in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs। महर्षि चरक के द्वारा लिखित, खास ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता नामक जो बुक है कि जो 2000 से भी ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में जानकारी जिसमें दी गई है। उसके बाद है महर्षि सुश्रुत हैज मेंशन्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। महर्षि सुश्रुत के द्वारा जिन औजारों का इस्तेमाल सर्जरी में कहा गया है उसके बारे में भी जो जानकारी है वो दी गई है। The instruments were so sharp that they would split a single vertical hair into divisions। कहने का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में जो सर्जरी के लिए बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आज भी हम जानते हैं कि सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, उसकी प्रिसीजन, उसकी शार्पनेस बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी में कट लगाने होते हैं उससे, ठीक है। उसका शार्प होना बहुत ज़रूरी है। और पहले के ज़माने के जो ये इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड, वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि विकसित थे कि वो एक सिंगल हेयर को, एक बाल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते थे। Vagbhat has written a book, Vagbhat Samhita, is also very important work. Study of Charak Samhita, Sushrut Samhita and Vagbhat Samhita is very useful for every doctor. So, ये तीन ग्रंथ जिसे प्राचीन विद्या के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खास करके डॉक्टरों के लिए कि जो मेडिसिन देते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशियंट टाइम इज एनरिच्ड विथ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस हैज प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर यूजेस। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन विथ बाउल शेप्ड बैंडेज। जैसे कि हमें मालूम है कि पहले के ज़माने में कोई एनेस्थेसिया यानी कि जो बीमार आदमी है उसको सर्जरी करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो अंग हो जहाँ पे सर्जरी करनी हो वो सुन पड़ जाए। तो अभी के ज़माने में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल है कि जो पूरे बॉडी को भी सुन कर सकता है। लेकिन पहले के प्राचीन समय में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो तभी के टाइम पे बैंडेज ऐसी बनाया करते थे कि जहां से
जिस पार्ट के ऊपर वो बैंडेज बांधी जाए उसकी वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अटक जाता था। They could skillfully operate an abdomen, kidney, cataract, hernia, stone, piles, and bladder, etc. They could classify, also join the broken or displaced bones, and extract the things pierced into the body easily and skillfully. इन सभी सर्जरी के लिए अलग अलग वर्गीकरण किए गए थे, मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन थे। हड्डियों को जोड़ने के लिए, चीजों को बॉडी में से निकालने के लिए, इन सभी चीजों का अलग अलग से क्लासिफिकेशन था। दे ऑल्सो गिव डाइटरी डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीज। जैसे कि कहा जाता है कि कोई बीमारी आपको खत्म हो जाए उसके बाद आपको खाने पीने में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, उसके बारे में भी जानकारी उसमें दी गई थी। They had a knowledge of plastic surgery as well as joining nose and ears. टूटे हुए नाक और कानों को जोड़ना, जिसे प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, वो भी तभी के जो ये महर्षि थे वो जानते थे। They showed a keen interest in the teaching students the method of surgery by doing surgery on the dead body or on the waxed statue. As we know, for the medical students, they are practically experience the surgery, and after that they are giving their suggestions, they are giving their best to the doctor fraternity. So at that time, I'm talking about the ancient time, they also teach the students and the method of surgery on the dead bodies. As we know, for the surgery purpose we need a body, a human body. Okay, so they are utilizing the dead body as well as the wax statue also. They conducted risky operation during delivery. They were expert gynecologists and pediatricians. Veterinary science also developed in ancient India. They wrote books on disease related to the horse and elephants. Among them, Hasti Ayurveda, Shalihotra and Ashwashastra are well known. The scholar's science writer of medicine Vagbhatta made valuable contribution through his work अष्टांग हृदय in the field of diagnosis. राजा महाराजा तभी थे उस वक्त, तो उस वक्त हाथी और घोड़े की चिकित्सा पद्धति भी बहुत प्रचलित हुई थी, कि जिसके अंदर दो ग्रंथ लिखे गए थे, हस्ती आयुर्वेदा हाथियों के लिए और अश्वशास्त्र जो शालिहोत्र के द्वारा लिखित था घोड़ों के लिए। फिर वाघभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय जो ग्रंथ था वो भी बड़ा प्रमुख और प्रख्यात था बीमारियों को पहचानने के लिए। तो ये था पूरा का पूरा साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद है मैथमेटिक्स, गणित शास्त्र जिसे कहते हैं। Many epoch-making mathematical discoveries were considered to be made in India, through which contemporary global affairs are carried out. The gifts of India to the world are discovery of zero, decimal systems, algebra, theorem of Bodhayan, geometry, and arithmetic. So these are the various concepts of the mathematics that were given by the ancient mathematicians. Aryabhatta discovered zero. The process of writing zero after figure was discovered by the sage named गुरुत समद। यानी कि एक के पीछे जीरो लगाने से क्या संख्याएं होती है, इसकी इन्वेंशन जो थे वो गुरुत समद नाम के संत ने की थी। आर्यभट्ट थे, उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड बाय प्लेसिंग 53 zeros आफ्टर 1। यानी कि एक के बाद आप 53 जीरो लगाओ तो उस संख्या को किस नाम से बुलाया जाता है, वो भी शोध तभी के गणित विशेषज्ञों ने की रखी थी। डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैड बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि तभी के टाइम पे वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। Bhaskaracharya has written a book Leelavati Ganit and Bij Ganit in 1115 AD. He discovered science of addition and subtraction. Brahmagupta introduced the types of equation. So
Bhaskaracharya also made a great contribution to the mathematics by writing the two books Leelavati Ganit and Bij Ganit, and also discovered the science of addition and subtraction. Brahmagupta introduced the types of equation. Please note down these names. Do not confuse between the Aryabhatta, Bhaskaracharya and Brahmagupta. Okay? Made a separate note for this mathematicians. Okay? See, the Aryabhatta discovered the zero, the Bhaskaracharya write the two books, Leelavati Ganit and Bij Ganit, and also discovered the sign of plus and minus. Okay? Apastamba had decided the measurement of sacrificial pits, यज्ञ वेदीज यूज्ड फॉर वैदिक यज्ञास इन शूल्व सूत्र. आपस्तंभ करके गणितज्ञ थे, उन्होंने यज्ञ वेदीज के अंदर इस्तेमाल किए जाने वैदिक यज्ञों की जो प्रथा एक मेथड थी वो शूल्व सूत्र के अंदर जानकारी दी गई थी. इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स. Aryabhatta had mentioned the value of pi is 22 divided by 7, which is equals to 3.14 in his book Aryabhattiyam. He also propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of circle. So, Aryabhatta, what is the contribution of Aryabhatta? First, Aryabhatta discovered the zero. Second, he also discovered the value of pi, which is mentioned in the Aryabhattiyam book. And pi is constant to show the ratio of circumference. Means for the circle, for the area of circle, for the circumference of circle, we need to use a pi. Multiplication, addition, subtraction, square root, cube root, etc. Ashtanga method introduced by Aryabhatta in his work. Hence, Aryabhatta is known as the father of mathematics. So sometimes the examiner asks you that why the Aryabhatta is known as the father of mathematics. So because of this contribution you can say that the Aryabhatta is the father of mathematics. Moreover, he had written many other books like Dashgitika and Aryabhattiyam. So these are the books that were written by the Aryabhatta. He has described main principles of astronomy in short in his book named Arya Siddhant. He found the solution of fundamental of mathematics, arithmetic and geometry. So, आर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम और दशगीतिका ये उनके द्वारा लिखित बुक थी जिनमें उन्होंने मैथमेटिक के कई सारे मुद्दों का उपाय जो है वो लिखा हुआ था. Apart from this, various aspects of mathematics had been discussed by many scholars in their book. Among them, the scholars like Bodhayan, Apastamba, Katyayan, Bhaskaracharya and Brahmagupta are included. So sometimes in a 1 mark question the board also asks that write the name of the famous mathematician. So these are the name of the famous mathematician. Do not forget the Aryabhatta and Bhaskaracharya because they are the pillars of the ancient Indian mathematics. Okay. So, this is the end of today's lecture. Student, in this we have discussed about the mathematics section, the various mathematicians, their contribution to the ancient science and technological heritage. Before that, we also studied about the science of medicine and surgery, in which the Maharshi Shushrut, Vagbhat, Maharshi Charak gave the enormous contribution in the field of surgery, instruments and their suggested methods of the surgery, the way they teach the students. Okay. Chemistry also, Acharya Nagarjun suggests the allopathy medicine with the herbal medicines. Okay. And the metallurgy section, in which the various kind of sculptures are there. Also in the chemistry, the Buddha statue, which is 18 feet high, found at the Nalanda, Sultanganj, Bhagalpur district of Bihar. Vijay Stambh was built by the Chandragupta II Vikramaditya, yet it was not corroded.
These are the greatest example of the heritage of science and technology. So that's it for today. Thank you.